Okay, so this is our day 28 or 29. I'm not sure, like maybe day 29, yes. So it's the day 29 of Leetcode Daily until I get a job. So yeah, it's fine. So let's start with the questions. So I was just doing the random questions and I have done some questions while I was not on video. So I will start from here now. For some, yeah, majorly same as threesome. So in threesome, what we do is taking the current element and the next element I plus one index and the last index, and then do a low plus high or binary such kind of thing, that if we get a low, we'll get higher, if we get a high, we'll get low. So that kind of thing. So same kind of thing we'll be doing here also. And so yeah, we can start with this. So firstly, obviously, two sum, three sum, four sum, whatever is it, we first have to sort it out. So nums dot uh, begin to nums dot end, we have to go. Now after doing this, first is let's take a set of vector int s. Fine. And uh, and n is what, nums dot size. Why we are taking this set is because we do not have to take the uh, duplicate ones, because ABCD should be distinct. Let's say if we come ABCD again, we will insert in set, it won't affect it. Set only stores the distinct elements. So that's why we are taking the set, and we will just iterate through the array I0 to I less than n, I plus plus. So it's a four sum, so we need to take three values. We will just do the same question as three sum. We're taking another loop and starting with I plus 1. So one value is nums I, one value is nums j, and next value is j plus 1, and high value is n minus 1. So this will do the thing that int low is j plus 1 and high is n minus 1. And rest of the question is same as we did for threesome. So while high is basically greater than low, while this is thing, we will be doing what is the constants are high, so we will take long here. So long sum will be what, nums I plus nums j plus nums low and plus nums perfect high. So we have got this sum. So if this, and obviously they are integers, so they won't add up to a sum. Okay, we can do one thing, we can do this. Fine. So if sum is equal to the target, we will this answer is s, will we will insert s, four values inside it, and these will be these four values. So we can just copy. Yeah, we got this. And if the else if the target is greater than sum, means we need a higher value, so we will just do this low plus plus. Fine. And else if the target is less than the sum, we need to decrease the sum, which will be doing this thing, high minus minus. So yeah, I guess that's fine. So now we need to return a vector, not a set of vectors. So we will do this, let's say answer, and it will be s dot begin to s dot end, and we will just return the answer here. Let's try running it. It's a simple question, like not much change from what we have done for threesome. Okay, time limit exceeded somehow because we are wrong somewhere. Okay, it should be j plus 1, and it should be j plus 1. Yeah, I guess.
Okay, no, 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 this should not be. J plus 1 is low. While low is less than high, perfectly fine. So while low is less than high, we are doing this sum low, high, num psi, num say. Fine. So if the sum is equal to the target, okay, in this case, if the sum is equal to the target, we have to decrease both high minus minus and low plus plus. So we have to change them both. Okay. Now it will do the thing. Uh, Still, there's a wrong answer. So it will be high minus minus low plus plus in case we got the answer. So correct. And in case we got the answer, j plus 1 is low, high plus 1, it will be I plus 1 to the I is less than n, j is less than n, high is greater than low. What is the error here? If I can see 2 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 0 2 minus 2 minus 1 0 2 is not an answer. Instead of that, these are the answers. So how does it happen is, we sort this thing out, right? We sort it out. Like, we'll take a set, and while doing this, if this is the value and we need to 0 as the answer, and we have to take 4 values at once. Okay, man. I'm sorry, I'm low. Why it was j plus 2? I don't understand this. I guess this will be fine. Yeah. Okay. So, okay. Yeah. Again, we can take long and do it here also. What if we do this? Should not be a error now, I think. Yeah, strange things Leetcode do sometimes. So remove nth node from the end of the list is the next question. Okay, so from the last we have to remove the nth node. So from the start we have to remove which node? See, one way of doing this is, let's just calculate the length. Let's say it's the first node, second node, third node, fourth node, fifth node, and sixth node. Six nodes are there. So length is 6, and we have to remove last second. So from the front, which one we need to remove? First, second, third, fourth, fifth we need to remove, and 6 minus 2 plus 1. So one could be, we find the length and remove the len minus k plus 1th element from the start. Okay, second thing could be like, we just want to iterate this, iterate this linked list only once, not again at all. So what we can do is, uh, see if we can do this, like, we go here first, then we do second, we'll stop here now. Okay, and from here, okay, we have completed the two steps. Now one pointer will be here and one pointer will be here. So they will go now side by side. This here, this here, this here, this here, this here, this here. And when this is here, this is here. This cannot go any further, so it will also not go any further, and we have to remove this node. We found this. So we will firstly move k steps forward, and then when we are at the k step forward, we will start iterating from the start of the list and this node at the same speed. Okay, and when, yeah, that's basically
two pointer approach. So we can do this, that let's take two pointers, list list node star first, or we can say one, both will be head, okay, and star 2 will also be head. We will move the 2 until k times. So for int I 0 to I less than k or n I plus plus, will move 2 is equal to 2's next. Now at this point, if the 2 becomes null, so the list is of length 6, and let's say we have to remove the seventh one. So we have reached the null pointer. So seventh one is 6 ended here, so we will remove this first. Okay, we will remove the head from here, because we can see here that if n is 1 or anything more than that, so n will be always साइज के बराबर होगा, और साइज के बराबर है ना, अगर मतलब साइज के बराबर है तो उसी एलिमेंट को हटा देंगे हम, ठीक है. If it was 2, okay, it was 3, first next is null, then yeah, heads next will return. Okay, so if 2's next is not 2's next, basically 2 is null, so we can say this. If this is the case, we will just return heads next. Fine. And now we will start iterating the 1 and 2 pointers at the same speed. So while 2 is 2's next is not equal to null, we gonna do what is, we will move 1 is equal to 1's next and 2 is equal to 2's next. Fine. And now wherever 1 is, we need to remove that. So 1's next will become 1's next, and we will just return head. How does this sound to you? I guess that's fine. Absolutely fine. Correct. So let's go to the next question, which is swap node in pairs. Okay, if this is swap node in pairs, and the next question is swap node in k pairs, right? Reverse node in, so this is swapping, basically reversing, and this is reversing node in k group. So let's do this question first. Okay, because this is basically, see, this is k group में reverse करने हमें, और ये हमें दो के group में reverse करने हैं, because swapping is what, reversing basically. Swap nodes means consecutive nodes को हमें swap करना है. तो पहले इसको करते हैं, और उसके बेसिस पे पहले वाला तो हो ही जाएगा पक्का, ठीक है. तो पहली बात तो जो हमें जितने रिवर्स करने हैं, अगर वो लेंथ से ज़्यादा हो गया, उस लिंक लिस्ट की लेंथ से ही ज़्यादा हो गया, तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं ना रिवर्स करने को. करेक्ट. जैसे इसमें देखो दो के ग्रुप में करना है, तो यहाँ पे देखो तीन के ग्रुप में करना है, तो पहले तीन तो कर दिए हमने, उसके बाद दो ही एलिमेंट बचे, तीन का तो ग्रुप ही नहीं बचा, तो हमने ऐसे कैसे छोड़ दिए. सो इफ let's say it is a function called length of this head is less than k, then we will just return the head. Fine, we will return the head. Otherwise हम रिवर्स करते कैसे हैं हमें पता है. हम एक करंट लेते हैं जो कि हेड होता है, we'll take a next जो कि null होता है, we'll take a previous जो कि null होता है, ठीक है. And what we will do is we have to reverse only in the length of, or not length, basically group of k. So हम k times loop चलाएंगे, और हर बार क्या करेंगे, next will be currents next. Currents next will be prev, means null basically for now, and now whatever previous will become, it will point to this. Okay, and current will become whatever we have assigned to next. Correct. And now at this point our heads next, head is still 1. Okay, we have reversed this 1 2 3 2 3 2 1 तो हमारा हो चुका है. अब हमारा हेड तो यही है, ठीक है. रिटर्न क्या करेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट वाला है प्रीवियस,
प्रीवियस 3 को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब 1 से हम जाएंगे कहाँ पे, 1 से हमें नेक्स्ट ग्रुप के जो भी अगली बार जो ग्रुप होगा उसका जो हेड होगा ना, वो जो भी रिटर्न, अब आप यहाँ पे रिवर्स करके रिटर्न क्या करते हैं, हमेशा रिटर्न हम ये करते हैं ना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट का प्रीवियस होगा, मान लो 4 5 6 होता तो 1 का नेक्स्ट 6 होता फिर, ओके। अगर 6 होता तो हेड्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन को हम कॉल कर देंगे विद current as the element, okay, because current has now reached 4। और ये क्या रिटर्न करेगा, 4 5 ही रिटर्न कर देगा क्योंकि इनका ग्रुप ही 3 का नहीं है। तो 4 5 रिटर्न करेगा तो हेड का नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट 4 हो जाएगा। सो दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब लेंथ वाला फंक्शन और लिख देते हैं एक बार, जो कि रिटर्न करेगा हमें इंट लेंथ एंड लिस्ट नोड स्टार हेड। और ये कुछ नहीं है, अगर हेड नल है तो रिटर्न कर दो 0, वरना रिटर्न कर दो 1 प्लस लेंथ ऑफ हेड का नेक्स्ट, ठीक है। हाँ परफेक्ट, एंड दिस, सो इट्स easy one, reverse group, reverse k group, okay, reverse k group, okay, in this perfect, and we submit this. Let's open the next the previous question. Until then, this one works fine, yeah, right. So we can just do it for k is equal to 2 in this case. Yeah, we can take this out and we can just return uh, reverse key group with head we will send and 2 we will send. Yeah, guess that should do the thing. Perfect, yeah. If we done one question, second question is always easy, similar to that, yeah, fine. We can also do it like it's more simpler than the previous one. There are only two values which we need to swap. So alternate solution of this could be, let me write the alternate solution also, if we can comment this out and comment this out also. And alternate solution could be, if head is null, oh, heads next is null, then we will just return head. Perfect. If 1 or 0 elements are there, we will do nothing. Otherwise we will take temp node, which will be head initially, okay, which will be basically heads next initially, because we have to remove we have to swap the heads and heads next, okay, heads next कर लेते हैं, और temp और heads next को हमें, temp और head को हमें रिवर्स करना है बेसिकली। तो हेड का नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, हेड का नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि टेम्प का नेक्स्ट ऐड हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट ज़रूर ऐड हो जाएगा, और फिर हम टेम्प को रिटर्न कर देंगे एंड वी विल रिटर्न द हेड, वी विल रिटर्न द टेम्प, ओके, टेम्प टेम्प टेम्प। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिकॉज 1 और 2 है, 1 और 2 को हमें स्वैप करना है, ठीक है। तो 2 अगर इनिशियली टेम्प है तो हम 2 को रिटर्न करेंगे क्योंकि 2 हेड हो जाता है नई वाली का, ठीक है। और 1 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट वाली जो पेयर है जिसका जो फ्रंट होगा, यानी जिसका जो टेम्प होगा, जो वो रिटर्न करने वाला है। तो वी कैन कॉल द सेम फंक्शन with temps next as the value, and this will do the same thing as our upper function did, so it will be just fine, not a problem anywhere. So we can go for the next question now, and that will be remove duplicates from a sorted array, easy one. There's a sorted array and nums, and we just have to remove the duplicates from that, okay. I don't think there is anything
very nice about this question. So yeah, it could be in place editing that could make this question a little twisty. Given the integer array nums in sorted in non-decreasing order, so it is sorted in increasing order. Remove the duplicates in place such that each unique element appears only once, and the relative order of the element should be kept same. Okay, if it's increasing array and there are duplicates, then the adjacent elements will be same, right? If an element has duplicate, it must be adjacent to it, and so if they are adjacent to it, mm, 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 mm. we need to return what? Return the number of unique elements. Okay, number of unique element को return करना is not a big thing, but the thing is, अब इसमें देखो, ओके ओके ओके, अरे हाँ, हमें लेंथ सेम रखनी है रहेगी, बस जो डुप्लीकेट्स है ना उनको लास्ट में पहुँचा देना है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 हम रखेंगे, उसके बाद वाले ये देखेगा ही नहीं। जो जज करने वाला है वो इट विल जस्ट सी द इनिशियल number of element which we just returned, initial distinct number of element will return, let's say 5 in this case. So it initial 5 element को चेक करेगा, distinct होने चाहिए और सारे element order में होने चाहिए। आगे 5 element से कुछ भी it doesn't care. Okay, so what we can do here is we can take basically हमें शुरू वाला maintain करना है, बाद वाले से मतलब नहीं है। So int if n is nums dot size, and we will take a variable which is initially at 0, and we will run this loop I0 to I less than n I plus plus, और हम पिछले एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो I1 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो इफ nums I इज इक्वल टू nums I minus 1, अगर पिछले एलिमेंट सेम है तो हम जो nums I है तो हम कुछ नहीं करेंगे बेसिकली। अगर वो इक्वल है तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही बाद में है C प्लस प्लस। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है तो nums I माइनस जे हम इक्वल कर देंगे nums I को। हाँ, ये सही करेगा क्योंकि देखो इस केस में क्या हो रहा है, जे यहाँ पे आई भी यहाँ पे है, ठीक है। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, आई यहाँ पे है और जे 0 पे है, तो जे और बराबर है, कोई बात नहीं। अभी तक हमने कुछ एनकाउंटर किया भी है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। अब 1 को हमें ना यहाँ पे 0 की जगह पहुँचाना है, तो 1 की जब हम देखेंगे जब अगर इक्वल नहीं है ये दोनों तो हमें इसके नेक्स्ट इसको पहुँचाना है, ठीक है। तो इट विल बी नम्स आई माइनस सी, आई माइनस जे, जे क्या है 0 ही है फिलहाल, और आई क्या हो गया 0 1 2 हो गया। तो नम्स 2 माइनस 0 इज इक्वल टू नम्स आई, मीन्स नम्स आई क्या है, नम्स आई आई देखो आई तो 2 हो गया, 1 के लिए तो क्या हुआ सी हमारा एक बढ़ गया, कि अब हमारा जो डिज़ायर्ड नेक्स्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो हमारा जे एक बढ़, ओह सी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट पे जे, तो हमारा जे एक बढ़ चुका है, यहाँ पे जे 1 हो चुका है, आई 2 होता है जब, तो 2 माइनस 1 नम्स 1 विल बी इक्वल्स टू नाउ 1। ओके, ये इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा और हमारा जे तो बढ़ा नहीं, तो जे इज स्टिल। अब हम किस पे जाएंगे, यहाँ 1 पे थे हम, 2 पे थे, अब हम आई इज इक्वल टू 3 पे जाएंगे और 3 को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे 1 ही रहेगा, बस इस 0 को हटा के हमने 1 रख दिया है, तो अब 0 एक ही बचा है इस पूरे एरे में, डुप्लीकेट नॉन डुप्लीकेट एक ही बचा है बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब जाएंगे तो देखेंगे ये भी 1 1 से इक्वल है, ठीक है। तो हम जे को बढ़ा देंगे, अब अगला एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, फिर हम देखेंगे फिर से बराबर है भाई, तो हम फिर अब यहाँ पे आ जाएंगे, जे एक और बढ़ा के, फिर हम ऐसे करके 2 को इस साइड रखेंगे, तो 2 कहाँ पे रखा जाएगा, 2 यहाँ पे रखा जाएगा, करेक्ट है। We can visualize this using Xcarry Draw, but I don't think we should pay this much attention to this question because it's an easy one, and we will just return n minus j because j is the number of distinct element. Every time we encounter uh, see the number of elements we will be inputting at the first 5 places are the number of times j will be increasing. Or basically j is the number of duplicates, actually whenever we get a duplicate j will be incremental, yeah, and we need to remove the duplicates numbers from n minus n में से and we will get the original ones. So yes, I guess correct. So yeah,
that was the question. And what's next is remove element. Let's see what this is now. How much long video have we done up to now? Is only 25 minutes. Fine, we can still do a lot of questions. So okay, again, given an integer array and the integer value, remove all the occurrences of this value. हम इस वैल्यू की सारी occurrences को रिमूव करना है और इन प्लेस रिमूव करना है, एंड वी हैव टू रिटर्न द लेंथ. उसके बिना कितनी लेंथ होगी. ओके, हाँ, जो हमें के रिटर्न करने जो भी वैल्यूज़ है उसके अलावा. ठीक है, तो हम उसी तरह जे एक ज़ीरो लेते हैं एंड कैन इज nums dot size. We will run a loop from I0 to I less than n I plus plus. ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे क्या कि अगर nums i, जो हमारी वैल्यूज़ है ना, जो हमारी वैलिड वैल्यूज़ हैं, उसको उसके बारे में ध्यान रखते हैं. अगर हमारी वैल्यू के बराबर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, nums x सॉरी जे को जे प्लस प्लस की जगह हमारी nums i को रख दो. बाकी की वैल्यू लास्ट में पड़ी रहेगी हमारी. ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम जितनी वैल्यूज उसके बराबर नहीं है, यानी जे. और ये भी इजी वाला ही है. या फिर या इट्स डन. नाउ इज द फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग. ठीक है, किसी फर्स्ट अकरेंस, देखो इसके लिए एक डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन भी होता है इस चीज़ के लिए कि सेड का हमें फर्स्ट अकरेंस पता लगाना हो तो. ठीक है, तो हम स्टार्ट एक एलिमेंट है, स्टार्ट एक वेरिएबल है, वो रखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है स्ट्रिंग. ठीक है, और जब भी हमारे स्ट्रिंग पूरी नहीं हो पाएगी, अगर कुछ नया आ जाएगा वहाँ पे, तो हम स्टार्ट को वापस से चेंज कर देंगे. और वी कैन से मिलेगी ही नहीं तो हम उसको हटा देंगे. तो पहली बात तो ना मिलना तो हम डायरेक्टली मतलब क्या कहते हैं, हाँ, ना मिलना तो हम डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं वैसे तो, बट लेट्स से रिमूव इट. ओके, तो हम 2 पॉइंटर लेते हैं, दोनों में एक एक पॉइंटर को चलाएंगे. सो वाइल आई इज़ लेस देन, बहुत बड़े बड़े नाम है तो भाई इसको एच लेते हैं, इसको एन लेते हैं. ठीक है, वाइल एच आई लेस देन एच डॉट साइज एंड या और दोनों के लिए चलते हैं, चलो देखी जाएगी. जे इज़ लेस देन एंड डॉट साइज, दोनों चीज़ें डजंट मैटर. ठीक है, हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इफ़ एच आई इक्वल टू एन जे, तो हम क्या करेंगे भाई, आई को प्लस प्लस कर देंगे और जे को भी प्लस प्लस कर देंगे, दोनों को आगे बढ़ा देंगे. ठीक है, एल्स अगर हमारे बराबर नहीं है तो हम एक स्टार्ट भी तो लेना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है. सब स्ट्रिंग स्टार्ट इनिशियली ज़ीरो है. ठीक है, तो अगर हमारे दोनों बराबर नहीं है तो जे हमारा नहीं वाला, तो जे तो वापस से ज़ीरो होने वाला है भाई, कि जे तो हम फिर से ऐसे शुरू करेंगे. अब इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे, हमारा इसमें देख लो, एल ई टी बराबर पा गया. अब ओ बराबर नहीं पाया, तो जे तो वापस एल से शुरू हो रहा है, और आई कहाँ से शुरू होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अब नेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा ना. करेक्ट है, आई अब ई से शुरू करेंगे हम, क्या पता यहाँ शुरू करने मिल जाए. ठीक है ना, हो सकता है ना ये. तो हमारा इसी एक एज केस है, तो हम आई को ले सकते हैं, हमारा स्टार्ट प्लस वन हो जाएगा अगर ये, और के क्या हो जाएगा, अब के जो भी हमारा जहाँ से अगला स्टार्ट हो रहा है वो हो जाएगा. तो हम रिटर्न करेंगे अगर जे आखिरी में पहुँच गया है, तो हमारा के है कि भाई जे अगर एन डॉट साइज पहुँच गया, मतलब पूरी स्ट्रिंग हमने अल्ट्रेट कर दी और वो मिल गया हमें, तो के है, वरना फिर -1 है भाई, नहीं मिला हमें.
सीधा सबमिट करते हैं कि इजी क्वेश्चन है। ओके नहीं start okay. Now the next question we can do directly from here also. Divide two integers. In what way? Oh really? given two divisor, dividend and divisor, so dividend by divisor करना है हमें, सीधा काम करेगा नहीं क्या? जीरो तो कोई होगा नहीं। अब कैसे माइनस का, दोनों माइनस होंगे तो अलग चीज़ होगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक माइनस होगा तो अलग रिजल्ट आएगा। सो हम देख लेते हैं पहले तो बोल डिवाइजर नेगेटिव 1 नेगेटिव ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं यार। 1 नैग फॉल्स है इनिशियली तो, और 2 नैग इज इक्वल टू, हाँ ये ले लेते हैं कि अगर डिविडेंड इज लेस देन 0, और ये ले लेते हैं डिवाइजर लेस देन 0। ठीक है, हमारा ये हो गए दोनों बूलियन वेरिएबल्स आ गए। अगर दोनों सेम है तो इफ 1 नैग इज इक्वल टू 2 नैग है तो रिटर्न कर दो डिवाइडेंड बाय डिवाइजर। ठीक है, और डिफरेंट है दोनों तो फिर रिटर्न कर दो माइनस ऑफ रन। अब यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट इज 2, एक्सपेक्टेड है -2। हाँ तो यही तो आना चाहिए, क्यों है भाई? डिविडेंड लेस देन 0 है, नहीं है तो ये तो फॉल्स आना चाहिए ना, नेगेटिव आना चाहिए। तो क्या हो रहा है देखिए इधर, ने 0 और 1 है भाई। अब 0 इक्वल टू 1 तो है नहीं, तो यही आना चाहिए ना। क्या ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है क्या? इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा। तो इस माइनस को अंदर ले जाओ भाई, और तो क्या ही बोल रहे हैं यार। ये माइनस क्यों नहीं आ रहा था अभी इसके? करते हैं तो इंटरफेस कर लेते हैं, ये कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और यहाँ रिटर्न कर देते हैं एड्रेस, यहाँ रिटर्न कर देते हैं माइनस प्लस। अब भाई ये 2 को आउटपुट दे रहा है, एक्सपेक्टेड जो -2 है। एक सेकंड रुको यार, इसको अगर मैं यहाँ रखूँ
बस सी आउट करते हैं यस कि ये यही आ रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए। जस्ट जा तो यही रहा है, फिर ये रिटर्न माइनस क्यों कर रहा है? Should truncate towards zero, which means losing its fractional part. For example, okay, got it. नहीं, not got it. -2.7 से तो बड़े की साइड जा रहा है, यहाँ पे छोटे की साइड जा रहा है, पर ये तो हैंडल वर्जन सेम है। जैसे अब इस केस में क्या है, इस केस में -2 आना चाहिए। 7/3 क्या आएगा? 2 ही आएगा, 2 का माइनस करना है हमें। अगर मैं ये कर दूँ कि res -2 times of res, this is just a test. I'm not sure about the result. See again. res क्या है? res हमारा 2 है, res हमारा -2 है। ओके तो ये तो वैसे ही कर देता भाई, क्या कर रहा था? ऑब्वियसली कुछ दिक्कत आएगी इसमें, ओवरफ्लो करेगा या तो। इसमें एक्सपेक्टेड गया है इसको, ये क्या रखा है? अगर डिवाइजर इंट मैक्स या इंट मिन है तो हम क्या करेंगे? यही तो केस हमें हैंडल करना है। जब डिवाइजर बहुत बड़ा हो तो डिवाइड करना मुश्किल होगा ना, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कल हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, ये नॉर्मली तो होने वाला है नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं? Video is 38 minutes, so it's late also. I won't be making this video long today, but yeah, I guess I will be doing this tomorrow only. So let's do this question tomorrow, because that won't be the case, that won't be the way we will be doing this. We have to think of something, like we multiplied yesterday, did the multiplied question. Same way we have to find some way to work with division, because the limits will be overflown in this method, and we cannot divide into max by something or into min by something uh, until we have a new method. Okay, and let's see what that method could be. We'll try to come up with a solution, but I'm sure it it involves some kind of bit manipulation for sure, some 2 power of kind of things. And I'm not very strong at bit manipulation questions, but I know the basic rules. I will try to solve it by them, but let's see tomorrow. So we'll be doing this tomorrow only, and that will be it for today. So yeah, this is the end of day 29.